So in this video, I'm going to talk about how to prepare for LRDI for CAT 2020. So guys, those who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years and I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams. So guys, throughout this 8 year of my career, what I've seen कि most of the students who are preparing for CAT, they find this section really challenging, or it can say बहुत tough लगता है काफी सारे students को ये section. So I wanted to share few things related to this and I wanted to discuss in detail कि तुमने इस section को कैसे prepare करना चाहिए. So guys, let's start. So here are a few topics I just jot down. जो सबको पता है, जो लोग इतने this year CAT के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. नाउ अंडरस्टैंड गाइज वन थिंग, डोंट थिंक लाइक तुम्हें CAT का LRDI प्रिपेयर करना है. ओके, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इज द जनरल थिंग, सो यू नीड टू डेवलप दैट अप्रोच. एंड if you look at just the CAT LRDI section, so then what will happen, that is really demotivating for the beginners, because you cannot even imagine that level of difficulty. Means it's not कि सारा completely difficult आता है, but the problem is that there are many easy questions or clubbed, means mixed with the tough questions. and data interpretation जो अभी recent CATs में आता है, CAT papers में आया हुआ है, that is something like, for me data interpretation is just like bar graph, line graph, pie chart, ये सब हमें पता है, tableau जिसमें calculations करना होता है. but if you look at the CAT papers, the data interpretation के साथ कुछ logical approach तुम्हें apply करना होता है. so you need to be really well with your logics, and you need to prepare for the approach, and you need to develop the approach for the logical reasoning and data interpretation for CAT. Okay, so the thing is, if you directly jump to the old means CAT papers या फिर actual previous old CAT papers or some mocks of CAT, the thing is the level of difficulty will be high. So you can go to that if you have some mentor to guide you. So अगर तुम्हें कोई ये पढ़ा देता है कि इस सेट को कैसे सॉल्व करना है, उसके अप्रोच क्या है, कैसे सोचना चाहिए, हाउ टू क्रैक दैट लॉजिक. So if somebody can make you walk through the puzzle, then you can get to you can start with the difficult, or that too, or not difficult, I can say easy to moderate level से start करना पड़ेगा फिर भी, but you cannot jump directly to the tough level. So to prepare for the CAT LRDI, what you need to do, just start preparing the basics. Not for CAT, I'm saying, just to understand the data interpretation में अगर तुम देखोगे तो bar graph, line graphs, pie chart, you can go for the snap papers, CD papers, जिसमें easily comprehension based, simple calculation based, observation based ऐसे questions है जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, so that you'll get the fair idea of the DI. I'm not saying कि सारा बेसिक पढ़ते रहो, but for the beginning, then you can start from, in logical reasoning, you can start from the topics like series completion, setting arrangements. Take the small sets of setting arrangement. You can go for circular arrangement, linear arrangement, blood relations, मैट्रिक्स पजल्स, देन सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स के बेसिक पर सीख लो, क्योंकि सेट थ्योरी वेन डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर भी कोई सेट था, इसके पहले भी था, और उसके पहले भी कैट पेपर में काफी टाइम्स ये आया हो. ओके, सो यू नीड टू just go through the basic things. Critical reasoning, clock calendars, your choice, you can go with that. means prepare करना है तो कर सकते हैं, that's not tough at all. तो तुम ये सारे topics पहले prepare करो, just get yourself a fair idea about the logical reasoning and data interpretation, and then you can come down to the questions of the CAT level of difficulty, you can say. and with that, अगर तुम CAT papers देखना चाहते हो कि क्या क्या आता है, but do not just focus on कि CAT में जो आता है मैं उतने ही questions practice करूंगा. It should not happen that way, because that is not going to help you. and one more challenge is कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है गाइस कि तुम स्नैप लेवल के या सीटी लेवल के भी क्वेश्चंस देखते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीरीज कंप्लीशन एंड ऑल. बार ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन में आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, एटलीस्ट समझ में तो आ जाता है क्या चल रहा है बेसिक्स में. ओके, बट इन द क्वेश्चंस लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट, इवन इन ब्लड रिलेशन, सो
where you are given it a set of clues, and even that question is of easy to moderate level. So beginner students struggles to solve those questions. The problem is you need to understand, first thing you can start with a means you can you need to take a trial and error. So make yourself, पहले तो तुम्हें अपने mindset बनाना है कि तुम्हें trial and error में worst case doesn't matter, तुम्हें first अटेम्प्ट में नहीं आया so थोड़ा और सोचो, give it a time to comprehend the information, try to connect in different way. इनिशियली ये सब होगा, फॉर श्योरली होगा, एंड तुम थोड़े से भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी क्लूलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बिगनर स्टूडेंट्स है. सो फॉर दो स्टूडेंट्स आई रिकमेंड वन थिंग गाइस. फर्स्ट थिंग, डू नॉट काउंट योर स्टडी टाइम, मीन्स ऐसे फोकस करके मत बैठो, बिकॉज क्या होता है कॉन्ट में एंड वर्बल एबिलिटी में तुम थोड़े से टारगेट रखते हो, यू अचीव दोज टारगेट इन 1 hour 2 hours. सो वो थोड़ा सा तुम्हें वो यूज टू हो जाता है हमें इसके लिए कि मुझे 2 घंटा दिया तो मेरा ये टॉपिक का आउटपुट आना चाहिए, मुझे खुद को ये फील होना चाहिए कि अब ये मुझे आ गया. बट लॉजिकल रीजनिंग में वो होता नहीं है. बट द प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम इज अगर तुम्हें एक सेट सॉल्व करते आ गया, दैट डजंट मीन तुम दूसरा कोई सेट पिक करोगे और वो तुम्हें आ जाएगा. इट्स नॉट कंपल्सरी, बिकॉज हियर इट्स द टोटल ट्रायल एंड एरर. सो व्हाट आई कैन से इज keep yourself motivated enough so that you go through the tough questions and you don't give up. Okay, first thing, prepare a mindset, try to connect the clues and give it a time. Don't think about it कि मुझे कैट में तो इतना टाइम है, या फिर स्नैप के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे इतना टाइम है, इतना इस टाइम के हिसाब से मुझे 10 मिनट्स में ये सेट कर देना चाहिए, या तो मुझे देख के जल्दी जजमेंट लेते आना चाहिए. डू नॉट गेट इन टू दैट, बिकॉज वॉट विल हैपन, दैट विल हैम्पर योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. यू वोंट अंडरस्टैंड. तुम्हारा टारगेट रहेगा 15 मिनट में कंप्लीट करना है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एज अ बिगनर. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डू नॉट गिव योरसेल्फ अ टाइम लाइन. कोई डेडलाइन मत रखो. सिंपली तुम्हारा मोटो होना चाहिए कि दिस इज द पजल एंड आई वांटेड टू क्रैक इट. सो गो अहेड विद दोस, ट्राई टू कनेक्ट द क्लूज. एक पॉसिबिलिटी गलत जाती है, डोंट गिव अप, दूसरी लो, तीसरी लो, थिंक अबाउट इट, क्या मिस हो रहा है. कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम तुम केयरफुली पढ़ते नहीं हो क्लूज, दैट्स अगेन अ बिग चैलेंज. सो मेक अ पॉइंट कि हर बार तुम बहुत कंसंट्रेशन के साथ, जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कंसंट्रेशन के साथ तुम पढ़ रहे हो, ट्राई टू कनेक्ट द क्लूज एंड गेट थ्रू द पजल एट योर ओन. डोंट डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन. सो क्या होता है गाइस, तुम बचपन से अपने काफी सारे तुम जब पजल सॉल्व करते हो तो काफी टाइम तुम काफी स्टूडेंट्स को अगर तुम देखोगे इन स्कूल टाइम, इट हैपन्स कि कुछ लोग पजल देखते हैं, दे आर क्यूरियस अबाउट द आंसर एंड वो जाके आंसर एक तो थोड़ी देर ट्राई करते हैं एंड फिर अगर नहीं आता है तो सिंपली दे गो थ्रू द आंसर कि हाँ ये आंसर था क्या, हाँ सो काफी इंटरेस्टिंग था, ऐसे तो उसके दे कैन जस्ट स्टॉप देयर. एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they think about the answer, they don't ask for the answer, they'll think about कि नहीं अगर ये पजल है इसी में आंसर है, इसी में आंसर छुपा हुआ है, these are the clues and I can find it, so give it a time. कुछ लोग उसको ट्राई करते रहते हैं and there are different personalities I can say. So you need to be like those students जो वो आंसर खुद से लाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं. यू कैनॉट सिंपली look at the solution and that won't actually build your approach, logical approach to solve the question. So that's what I can say. So of course तुम कैट लेवल के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें कुछ हिंट्स लेने हैं, यू कैन ऑफ कोर्स गो थ्रू द सॉल्यूशंस अगर नहीं आता है तो, बट दैट्स द फाइनल स्टेप. फर्स्ट थिंग, गिव इट अ ट्राई, प्रॉपर 100% ट्राई दो. देन उसके बाद ही सॉल्यूशंस पे भी डायरेक्टली सॉल्यूशंस पे मत आओ. आई रिकमेंड ऑलवेज टू गो फॉर द हिंट्स, जस्ट अंडरस्टैंड द हिंट्स कि क्या यूज कर रहे हैं. देन अगेन अपना वापस से खुद से स्टार्ट करके देखो क्या तुम अभी कनेक्ट कर पा रहे हो, एक आध हिंट पिक किया सॉल्यूशन से, ऐसे कुछ तुम ट्राई कर सकते हो. सो दिस इज द वे टू लर्न द लॉजिकल रीजनिंग. You cannot simply go through the solutions by reading it and that is not going to help you. Okay, and the one thing I would like to share this is
जब तुम्हारा आंसर काफी लेट आता है गाइस, यू थिंक कि अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने 1.5 घंटा लगा दिया या 2 घंटे लग गए, तुमने अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट किया और तुमने 2 घंटे के बाद बट तुम्हें आंसर आया, सो डोंट फील लाइक कि तुम्हें 2 घंटे देने के बाद आंसर आया जो 15 मिनट में आना चाहिए था या 10 मिनट में आना चाहिए था, और तुम अपने टारगेट से बहुत दूर हो, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. इट इज नॉट लाइक दैट. अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ आई गिव यू अ पजल और किसी पर्सन ने उसको ट्राई किया, किसी भी स्टूडेंट ने उसको ट्राई किया एंड उसको फर्स्ट पॉसिबिलिटी जस्ट उसने ट्राई कर लिया एंड ही गॉट द आंसर करेक्टेड. लेट्स टॉक अबाउट द अरेंजमेंट क्वेश्चन. अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में लकीली, अगर तुम प्रॉपर सही अरेंजमेंट ट्राई करते जाओगे, लकीली 1-2 क्लूज तुमने लकीली ट्राई करके देखा कि नहीं चलो यार ये ऐसा होगा तो करके देखता हूँ, एंड यू गॉट द आंसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड तुमने अपने जो वही क्वेश्चन जिसको लेट्स से किसी ने 2 hours 1.5 hours सॉल्व करने के बाद उसको समझ में आया और किसी ने 15-20 मिनट्स में कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ द बिगिनर स्टूडेंट्स. ओके, सो जिसने 20 मिनट्स में सॉल्व किया उसको ज्यादा सीखने को नहीं मिला है एक्चुअली, बिकॉज एज अ बिगिनर यू शुड गो बाय द वर्स्ट केस. इवन आई विल टेल यू, अगर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, थिंक अबाउट उसी क्वेश्चन पे कुछ डिफरेंट वे में ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारा आंसर और किसी डिफरेंट क्लूज को कनेक्ट करके और इजीली आ जाए, या फिर यू कैन हैव अ अल्टरनेट वे, या फिर क्या क्या रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तुम इसके बारे में भी सोच सकते हो. सो इट इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, इज ऑल अबाउट द टेकिंग पॉसिबिलिटीज. बी क्यूरियस, डजंट मैटर if you go wrong 10 times and you get the answer 11 times or more than that also, do not give up and try each of the possibility. worst case से जाओ, जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया थिंक अबाउट कि किसी ने ये सोचा तो ये पॉसिबिलिटी से आ सकता है क्या, देन डेफिनेटली विल गो रॉन्ग मेनी टाइम्स, बिकॉज हर बार हर पॉसिबिलिटी से तो सही आंसर नहीं आता है. सो दिस इज द वे टू लर्न द लॉजिकल रीजनिंग. Go for the trial and error. Do not give up at all. So it requires persistence. Okay, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर लूंगा तो मुझे आ जाएगा. गाइस, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. ऑफ कोर्स तुम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हो बार ग्राफ से, मींस डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए अगर तुम देखोगे तो ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब से फैमिलियर हो तो तुम्हें इजीली समझेगा. लॉजिकल रीजनिंग में इट डजंट मैटर, मींस पहले कैट पेपर्स के तुम्हें क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें ओवरऑल आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या आया था, तुम थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे. जैसे गेम्स के बारे में कुछ गेम्स एंड टूर्नामेंट के बारे में क्वेश्चंस है, तुमने वो कर लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आता है तो तुम सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चंस को पॉजिटिवली टैकल कर सकते हो अगर तुमने वो पहले से सॉल्व किया हुआ है तो. ओके, दैट्स जस्ट वन सिंगल प्लस पॉइंट. इट डजंट मीन कि किसी ने गेम्स एंड टूर्नामेंट की प्रैक्टिस नहीं की है तो वो वहां पे जाके सॉल्व नहीं कर पाएगा. एंड इट ईदर वे इट डजंट मीन कि तुमने गेम्स एंड टूर्नामेंट के 2 सेट सॉल्व करके गए मतलब तुम गेम्स एंड टूर्नामेंट का कोई भी सेट जाके सॉल्व कर लोगे. इट डजंट हैपन दैट वे. So it's not the structured thing like CAT quantitative ability. You have to develop that approach. You need to create that mindset or to not to give up in between and think about all the possibilities so that जब भी तुम्हें कोई लॉजिकल रीजनिंग का पजल तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं इसको क्रैक कर सकूंगा, यहाँ पे ही इसका आंसर छुपा हुआ है एंड आई कैन क्रैक इट, आई कैन कनेक्ट द क्लूज, सो आई कैन गो रॉन्ग 3, 4, 5 times but definitely I can get the answer while practicing. That should be your mindset. So that's the mindset required for logical reasoning. So guys, go ahead, prepare your basics. Don't give too much time for solving the tough questions of CAT. Initially I'll say last 3 years के CAT papers online available है guys. So मैं भी यहाँ पे YouTube पे काफ़ी सारे सेशंस मैंने लिए हैं जिसमें मैंने एक्चुअल CAT पेपर्स 2019 के दोनों स्लॉट्स मैंने एक्सप्लेन किए, तो वही 16 सेट हो जाता है. And I'll tell you 2018-17 के भी we have just started with the 2017 and 18 के भी काफ़ी हमने यूज़ की हुई है, पहले भी काफ़ी सेशंस में हमने उसको सॉल्व भी किया. So we can go through that puzzle and the beginner students must solve only the question of their interest. If you think
यू गो थ्रू द पेपर ऑफ कैट 2019, दोनों स्लॉट्स देख लो तो तुम्हें फेयर आइडिया आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. डेफिनेटली तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करते हो तो भी 1 और 2 पजल तो डेफिनेटली हो सकता है. कभी तुम्हें 4 क्वेश्चंस की जगह पे 2 क्वेश्चंस आएंगे किसी सेट के. इट इज डूएबल, इट्स नॉट दैट टफ. So go through the questions of previous CAT papers, but do not solve it completely as a beginner. Just go through the sets which are of your interest. जहाँ पे तुम्हें information समझ में आ रहा है उतना solve करो, आगे जाओ. Prepare the basic topics for data interpretation. I'll again say go through all these things: line chart, pie chart, radar chart, tabular, DI, case slides, reasoning based DI. ये थोड़ा सा practice करके रखो, at least basic. And in logical reasoning we have this much type: seating arrangement, blood relation, linear arrangement, puzzle, set theory, syllogisms. These are the important topic. Even cubes is also one of the important, right? So you can go ahead this way. That's it for the day, guys. Those who have not subscribed to our channel, do it. And for the PDF note, you can come to